Hello friends, this is Sonu Kumar and you're watching me on YouTube. Actually something I want to say you about this topic. I hope all of you can understand what I mean to say and what I want to say. Actually I'm not farther away or farther apart from these situations, the pandemic situations which is running all over the globe. So let's start today our topic. Hello dear friends, today we are going to discuss gaseous state. This will be a full topic रिव्यू. आप कह सकते हो कि पूरे चैप्टर का ये एक रिव्यू होगा. चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा गैसेस स्टेट वाला, उस पूरे चैप्टर का एक रिव्यू होगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो मैटर के स्टेट्स हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है. तो ये सब तो हम लोग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. जो स्पेशली न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है वो स्टार्ट होता है हमारा गैस लॉस से. बॉयल्स लॉ आप जानते हैं. व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. कहने का मतलब सीधा सीधी वॉल्यूम जो है प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो वहाँ से V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. उसके बाद आता है हमारा चार्ल्स लॉ. राइट इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम का बनता है. ये फिगर 2a.1 जो है. उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ चार्ल्स लॉ का. चार्ल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कहने का मतलब सीधा सीधी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो V इज इक्वल टू KT या V/T इज इक्वल टू K. कांस्टेंट जो है यहाँ पर K कांस्टेंट हो गया, तो आप देख सकते हैं V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 या फिर V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2. इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं चार्ल्स लॉ को. ऑल्सो एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. सीधा सीधी समझ जाइए कि मतलब अगर आपका ये जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो जैसे जैसे मतलब वो 273 डिग्री सेल्सियस, तो आप जानते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन. तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उस हिसाब से जैसे 1 डिग्री राइज होगा तो 1/273 इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0/273T. तो यहाँ पर जिस तरह से टेम्परेचर अगर मान लीजिए V0 बढ़ा तो वही V0/273T कर देंगे. तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये जो है हमारा किस चीज़ का ग्राफ है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का. किस तरह से स्लोप आप देख लीजिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का. अब आ जाइए गेलुसैक और एमेंटॉन्स लॉ. ये अक्सर ही नहीं पढ़ाया जाता है. इसका नाम जो है, इसमें गेलुसैक के साथ जो है एमेंटॉन ने भी इनको साथ दिया था, जिसमें हम लोगों ने सीधा सीधे पढ़ा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2. P1 इज इक्वल टू P0 प्लस P0/273T. तो ये हो गया हमारे गैसियस लॉ. एक और बचा है एवोगैड्रो लॉ. तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम. तो आप समझ गए ये सारे हमारे गैसियस लॉ थे, जिसमें आप लोगों ने देख लिया कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ये हमारा एवोगैड्रो नंबर हो गया. जब ये तीनों चारों गैसेस लॉ को कंबाइन किया गया तो आपका जो कंबाइंड गैस इक्वेशन निकला वो हो गया PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे P प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V जो है हमारा वॉल्यूम है जो गैस लीटर में ऑक्यूपाई होता है, N जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स है जो गैस में प्रेजेंट है, जो N की वैल्यू W/M, और T जो है हमारा टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन, और R जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल पर केल्विन होता है. तो अब आ जाइए इनका जो वैल्यूज़ है ये टेबल में आप देख सकते हैं कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन पर मोल, 8.314 ये वैल्यू है. यहाँ पर आप देख सकते हैं किलो पास्कल पर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, वैल्यू 1.99 किलो कैलोरी पर मोल. अब आ जाइए एक्वस टेंशन के बारे में. जब कोई भी गैस, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर अ वाटर इट आल्सो गेट्स सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर. द प्रेशर exerted by water vapor is called aqueous tension. The pressure of the dry gas is calculated
as the following: density of the gas density is equal to pm by RT, where m is the molar mass of the gas. सीधा सीधे आपको ये समझना है कि जो प्रेशर वाटर वेपर के थ्रू जो एग्जर्ट होता है उस प्रेशर को क्या कहा जाता है? एक्वस टेंशन कहा जाता है। और जब ये आप इसका डेंसिटी किसी भी गैस का निकालोगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय आर टी। ये जो कैपिटल एम है वो किसी भी गैस का मोलर मास होगा। अब आ जाइए पार्शियल प्रेशर के रूप में। किसको कहोगे? पार्शियल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in a mixture is defined as the pressure which the gas would exert if it is allowed to occupy the whole volume of the mixture at the same temperature। कहने का मतलब ये किसी भी गैस का जो मिक्सचर होता है उस पर जो हम लोग प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो मतलब कितना प्रेशर हर गैसेस मॉलिक्यूल्स पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वो सारे प्रेशर का जो मतलब सम करोगे तो मतलब एक सबसे पहले आप समझिए कि वन टाइम में प्रेशर लगा P1, फिर P2, P3, P4, तो अलग अलग से जो प्रेशर लग रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है इट इज़ अलाउड टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सेम टेम्परेचर। ये था हमारा पार्शियल प्रेशर के बारे में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? द टोटल प्रेशर ऑफ अ mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of the constituent gases। वही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वही कहा कि पूरे अलग अलग प्रेशर को जब आप कंबाइन करोगे टोटल पार्शियल प्रेशर जो होगा सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स हो जाएगा। टोटल पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर आप ऐसे कह सकते हो, सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट एट विच अ गैस डिफ्यूजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैसेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन अपॉन टाइम। ठीक है, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू D2 बाई D1 अंडर रूट। ये जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। सीधा सीधी समझ जाइए कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज मतलब द रेट एट विच द गैस डिफ्यूजेस, मतलब सीधा सीधी समझ जाइए जब कोई भी गैस जो डिफ्यूज़ होगा उसका रेट जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस हो जाएगा। सीधा सीधी समझ लेना आपको, वो स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1। और वेपर डेंसिटी आपको जस्ट अभी बताया मैंने, कैपिटल M बाई 2 मोलर मास है यहाँ पे, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। ये था हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब आ जाइए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल spherical tiny particles. The molecules of a given gas are completely identical in size, shape and mass. The volume occupied by the molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. The molecules are in rapid motion, which is completely random. During their motion, they collide with one another, and with the sides of the vessel, the pressure of the gas is due to the collision of the molecules with the sides of the vessel. All collisions are perfectly elastic. There is no force of attraction or repulsion amongst the molecule. That's why PV is equal to 1/3 mnu square। ये जो आप mnu square RMS देख रहे हैं, यहाँ पर P जो है प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, M जो है एवरेज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और u इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसेस। तो ये था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आ जाइए काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैसेस। Ke is equal to 3/2 RT। It does not depend upon the nature of gases. What is kinetic energy per molecule of the gases? Ke is equal to 3/2 kT, where K is also known as Boltzmann's constant. Now molecule speed of gas molecules. Root means square speed. URMS. It is defined as the speed possessed by the gas molecule. If the total energy of the gas is equally distributed among all its molecules, it is equal to the root of mean of square of the speed possessed by the gas molecules. So URMS is equal to under root U1 square plus U2 square plus U3 square plus U4 square dot 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 UN square upon N. So URMS is equal to under root 3 RT by capital M. That is also equal to 3P amount ये rho. RMS speed of a gas is dependent upon its absolute temperature as well as the molecular mass. It depends upon the nature of the gases. So most probable speed, it is also defined as the speed processed by the maximum fraction of the molecule of a gas. So mu mp is equal to under root 2 RT upon capital M. Now average speed, U average, it is the average of the molecule speed processed by the gas molecules. So U average is equal to under root 8 RT by pi M.
So here there are some values given: RMS speed, average speed, and the most probable speed. Under root 3 RMS speed, and average speed will be under root 8 by pi, and the most probable speed will be under root 3. RMS speed 1, average speed 0.0921, most probable speed 0.816. RMS speed 1.732, average speed 1.595, most probable speed 1.414. RMS speed 1.224, average speed 1.128, and most probable speed 1. Now let's discuss about the real gases and the ideal gases. The gases that obey gas laws like Boyle's law under all the conditions of pressure and temperature are called ideal gases. No gas is an ideal gas. ये आपको हमेशा समझ के रखना है कि कोई भी गैस जो है आइडियल गैस नहीं. The gases that obey the gas law, Boyle's law, under all the conditions of pressure and temperature are also called real gases. All the gases are real gases and show deviation from the ideal behavior. What are the causes of deviation from the ideal gas behavior? Actually, the gas molecule face intermolecular attractions, and so the pressure exerted by the gas molecules due to their collisions with the walls of the container is less than what is expected. Gas molecules do have a size of their own, and so the volume actually occupied by the gas is less than what is calculated to be. Compressibility factor Z is equal to PV by nRT. Boyle's temperature. The temperature at which the real gas behaves ideally is called Boyle's temperature. At Boyle's temperature, the value of Z remains nearly equal to the unity over a good range of pressure. So TB is equal to A by BR. What is van der Waals equation? P plus AN square by V square into V minus NB is equal to nRT. So P plus A by V square into V minus B is equal to RT for 1 mole of the gases. Now here A and B are the van der Waals constants. Now you have to understand van der Waals constant A and van der Waals constant B. Van der Waals constant A is used in pressure correction, depends upon the intermolecular forces between the gas molecules, also known as coefficient of attraction. The unit atmospheric liter square per mole square. SI unit Newton m to the power 4 per mole square. Now van der Waals constant B used in volume corrections depends upon the actual size of the gas molecules, known as co-volume or excluded volume. B is equal to 4V. V is the volume of 1 mole of the gases. Units liter per mole, SI units meter cube per mole. So conditions when the real gas behave as ideal gas are high temperature and very low pressure. What is critical temperature? The maximum temperature above which a gas cannot be liquefied by the applications of whatever high pressure. So critical temperature is equal to 8A upon 27 RB. 8A upon 27 RB. Remember this formula because this formula are specially we are going to use in the numericals. Critical volume, the volume occupied by 1 mole of a gas at its critical temperature are called at its critical temperature and critical pressure is called critical volume. So critical volume is equal to 3B. Joule-Thomson effect, very very important. When a non-ideal gas suddenly expands from a high pressure to a low pressure, there is a temperature change. It is an adiabatic effect. For any given pressure, a real gas has an inversion temperature above which expansion at constant enthalpy causes the temperature to rise, and below which the expansion at constant enthalpy causes cooling. So these all the things we are going to use in our numericals. I hope all of you have understand all the concept. Don't forget to write these numerical problems in your notebook, and after then start solving either MCQs or question answers of this chapter. That's all for today. Thank you. Have a nice day, great day, and if you have liked this video, don't forget to like and subscribe the channel. That's all for today. Thank you very much.